Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vivek Official CR7. So today I'm going to tell you very important tips of English spoken. So I think these tips can be one of the best tips in spoken or English communication. तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे आई थिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक आई मीन टू से टिप्स जो कि व्हेन इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट so if you want to learn English communication, so I think this video going to help you very much. तो आइए देखते हैं कि what are the things that we are going to learn here. तो first of all, I have just jotted down here what is input and what is output in English communication. So in this video we are going to learn कि जो इंग्लिश स्पोकन में क्या इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है. एक्चुअली व्हेन वी वर इन चाइल्डहुड, सो जब हम लोग बचपन में थे, सो आई थिंक नो बडी टोल्ड यू दैट गो एंड लर्न द हिंदी ग्रामर. जब हम लोग छोटे थे तो वी स्टार्ट इमिटेटिंग द पीपल, वी स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी नॉट इंग्लिश, क्योंकि जब हम हिंदी इज़ आवर मदर टंग एंड श्योर वी विल स्पीक हिंदी. तो क्या किसी ने उस समय आपको बताया कि आप जो हिंदी है वो हिंदी आप गलत बोल रहे हैं, जाइए आप जाके हिंदी का ग्रामर सीखिए, हिंदी का व्याकरण सीखिए. सो हैव यू एवर टोल्ड एनीवन? किसी ने कहा ऐसा? नहीं. सो आई थिंक यू लर्न हिंदी बाय देन इमिटेटिंग द पीपल, बाय लिसनिंग, बाय रीडिंग, बाय राइटिंग. मीन्स you have just copied the people, you have just imitated all the things. So when you have nominated somewhere, so you just jotted down your name somewhere. So I think this process has has done everyone. तो I think ये process सभी लोगों ने किया होगा. So let's see what are the input and what are output. So first of all, you can see here I have just written reading, writing and listening. These are what? These are input. Why I am saying like that? Reading, writing and listening is just like an input. Actually, first of all, let's talk about the reading. If you read so much, if you read continuously, if you read day by day, if you read per day, means जब आप लगातार पढ़ेंगे then you are going to collect so many thoughts, so many ideas. So I think these ideas will help you to speak. क्योंकि आप जैसे सपोज वी बड़ा आपके पास कोई टैप है और या फिर कोई भी चीज़ है. सपोज व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग टाइम, देन इफ़ यू आर ऑन रेंट रूम, सो यू कॉल योर लैंडलॉर्ड whoever. तो व्हेन यू प्रेस द हैंड पम्प, देन यू विल गेट द वाटर. विदाउट प्रेसिंग द हैंड the hand of the hand pump, I think you can't get the water. So in the same way, the more you read, the more you learn, the more you are going to speak. मीन्स जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके पास थॉट आएगा, विचार आएगा, उतना ज़्यादा आप यू कैन डिस्कस, तो उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है. इट मीन्स रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ राइटिंग. राइटिंग आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट method. Actually, if you have heard the name of Francis Bacon, I think in his there is topic like I think the chapter is of studies. उन्होंने एक फ्रांसिस बेकन जो कि आई थिंक ही इज़ अ फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, जो कि इंग्लिश एस्से के पिता कहे जाते हैं, वो इन्होंने अपनी देयर वाज ए क्रिएशन दैट इज़ ऑफ स्टडीज़. एक ऑफ स्टडीज़ करके इन्होंने एक लिखा है. उसमें लिखा है राइटिंग मेक्स परफेक्ट मैन. जो राइटिंग होती है वो आदमी को क्या बनाती है? परफेक्ट बनाती है. सो आई थिंक व्हेन यू राइट सो मेनी थिंग्स अगेन एंड अगेन, आई थिंक when you start writing, then you collect the ideas and what to write and where to write and how should I write. Means you have to do a lot of things. You have to you have to undergo towards I think so many times types of work. So that is why writing is very important. And second thing is listening. I think everybody knows that a good listener is a good speaker. Why it is happens? When you listen carefully of anyone, suppose if you are sitting in the class and your teacher is just start teaching, and on that time if you are not listening, if you are not going to take care of
whatever your teacher is going to deliver. So I think you can't observe anything, you can't accept any ideas, you can't accept. So if you want to speak English, the main thing is that first of all you have to be a good listener. If you are a good listener, then you will collect so many ideas, you will recollect the ideas, then you are going to you are going to implement it in your sentence. When your implementation is very good, then you can create a good sentence, you can construct good sentence. I think then I think you can, if you listen properly, then you can speak properly. So रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग इज व्हाट दे आर जस्ट लाइक इनपुट, मीन्स इन सबको हमको क्या करना है, इनपुट एक तरीके से इन सबके बारे में हम इन सबको हमको लर्न करना है, पढ़ना है, लिखना है, सीखना है. बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इनपुट. अब हम लोग बात करेंगे कि इन इंग्लिश कम्युनिकेशन में मतलब आउटपुट क्या है. लेट्स सी. सो देयर इज ओनली वन आउटपुट. व्हाट? स्पीकिंग. Speaking is your output. I think whenever you have joined any coaching institutes, so I think there are so many people who try to ask you where are you going, or what do you do at in spare time. So if you have joined any institute or online classes, so I think they start asking, then what are you doing right now, or then once you said I'm learning English spoken, I'm learning English communication, so they are just trying to put up, or they say speak some sentences of English. Then you'll think, oh my god, how to speak and what to speak. It happens with everybody. But when you're speaking, when you start speaking, so I think you will feel very comfortable. Once you started your language, I think your language will help you very much. So speaking is just like output. And in English communication, you are not going to provide any kinds of certificate. Suppose if you have joined any institute or classes, online classes, wherever, you can't show your certificate by by a paper. मतलब आप कहीं भी स्पोकन सीखे हो तो आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि मैंने यहाँ से इंग्लिश स्पोकन सीखा है. इफ़ यू वांट टू शो योर सर्टिफिकेट, योर आउटपुट विल बी सर्टिफिकेट, योर स्पीकिंग विल बी सर्टिफिकेट. सो today I have told you what is output and what is input. So reading, writing and listening is your input, and the very fabulous thing is what? Output means speaking is your output. Thank you so much.